Hello, Assalamualaikum. I'm Dr. Ansari Farjana Vaidyanjana from Chemistry Department, JT Arts Science and Commerce College, Maligaon. Here, today we shall discuss about the spectrophotometry. Spectrophotometry analysis of the TYBC in analytical chemistry. Before going to deep study of spectrophotometry analysis, you must know some terminology which are used during the course of spectrophotometry analysis. Spectrophotometry is one of the most useful techniques used for the study of atomic and molecular structure. It is a branch of science which deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. Study of interaction of electromagnetic radiation with matter is the basis of the spectrophotometry analysis. Electromagnetic radiation may be considered as a simple harmonic wave propagated from a source and traveling in a straight line except when reflected and refracted. This radiation will be associated with the properties of wavelength. It is the distance between two successive maxima or minima, or you can say that the distance between the two crest and the trough is called as the wavelength or the frequency. Usually the wavelength is expressed in centimeter or in angstrom unit. Frequency, the number of complete wavelength units passing through a given point in a unit time is called the frequency of radiation. It is generally expressed in cycle per second or in hertz. That means unit of wavelength is centimeter or in angstrom, whereas the unit of frequency is cycle per second or the in hertz. Wave number, it is the number of wave per centimeter in vacuum is called as wave number. The relation between frequency, wave number and the wavelength. The relation between these are listed here. The product of wavelength and frequency equal to the velocity of the wave in the medium. That means lambda into nu is equal to velocity. As the velocity of light is represented by c, which is maximum in vacuum, we can write it as lambda nu is equal to c, or this is nothing but 3 into 10 raised to 10. Rearranging slightly this equation, take this equation from this side to this side, then this equation may be written as 1 upon lambda is equal to nu upon c. Now we know that nu bar is equal to 1 upon lambda. Therefore, substituting the value of 1 upon lambda instead of 1 upon lambda, you can write in this equation, above equation, the nu bar. So this above equation becomes nu bar is equal to nu upon c. That means nu bar is equal to 1 upon lambda is equal to nu upon c. This is the simple relation between the frequency, wave number and wavelength. Interaction of radiation with matter. The entire range over which electromagnetic radiation exists is known as electromagnetic spectrum. Various spectroscopy, the electromagnetic radiation has been divided are listed in table. There are the different electromagnetic radiation. If the wavelength is 10 raised to minus 1 nanometer, then it is called as gamma ray. Gamma ray. If it is 10 raised to minus 1 to 10 nanometer, it is X-ray. If it is 10 to 400 nanometer, it is called as ultraviolet ray. 400 to 700 nanometer, it is called as visible ray. 10 raised to 3 to 10 raised to 5 nanometer is IR ray.
10 raised to 5 minus 10 raised to 5 to 10 raised to 7 is called a microwave, and 1 to 100 centimeter is called a radio wave or the ESR spectroscopy. And when it is ranging from 100 centimeter to 1000 centimeter, it is called as radio wave NMR spectroscopy. Some terminology in absorption measurement are radiant energy. Radiant energy, that means it is defined as the energy transmitted as electromagnetic radiation. It has the property of both particle and wave motion. It is characterized by the wavelength and frequency. Radiant power, it is generally known as intensity and denoted by capital I. Energy per unit time is called as power. Radiant power is the rate at which energy is transported in a beam of radiant energy. It is the quantity measured by the detector such as photocell or even by thermocouple. The radiant power incident upon the cell is given by the symbol P0, and the transmitted radiation by the cell is denoted with the help of the P. Transmittance. It is simply fraction of incident power transmitted by the sample. It is the ratio of radiant power transmitted by the sample to the radiant power incident upon the sample, and usually expressed as percentage transmittance. Transmittance is equal to P upon P0, radiant power of transmitted light upon radiant power of incident light is called as transmittance. If it is multiplied by 100, it is called as percent transmittance. Absorbance. It is formally known as optical density or extinction. The absorbance is the logarithm to the base 10 of the reciprocal of transmittance, where pure solvent is the reference material. That means absorbance is the logarithm to the base 10 of reciprocal of transmittance. That means absorbance is denoted with the help of letter A. A is equal to minus log of 1 upon T is the absorbance. Whereas absorptivity, it is designated with the letter small a. It was formerly known as the extinction coefficient or specific extinction. Absorptivity is defined as the ratio of absorbance to the product of optical path and concentration of the sample. So mathematically it is written as small a is equal to capital A upon B into C. Capital A is the absorbance, small b is the path length of the radiation, मतलब क्वेट का इंटरनल डायमीटर जो रहता है वो कहलाता है, इंटरनल जो डिस्टेंस रहता है वो कहलाता है b, और c is the concentration of the sample. If absorptivity is multiplied by molecular weight, it becomes molar absorptivity. Molar absorptivity is designated with the help of letter epsilon. So epsilon is equal to small a, absorptivity into molecular weight is called as molar absorptivity. Path length, it was formerly denoted with the help of letter small l or small d. It is the internal thickness of the cuvette in which the test sample is taken. Internal thickness of the cuvette, internal thickness of the tube in which this test sample is taken, it is denoted with the help of letter B. जैसा कि हमने देखा ऊपर, internal diameter, internal thickness, B, small b. There are two types of the fundamental law. That means the fundamental law are of two types, Beer's law and Lambert's law. When monochromatic light is incident upon homogeneous medium, a part of radiation of incident light is reflected, a part of it is absorbed by the medium, and remaining is transmitted. This is shown in the figure. When we allow a radiation to pass through a medium,
सम ऑफ द मीडियम सोर्स से जो रेडिएशन आ रही है वो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो एब्सॉर्ब हो जाएगी मीडियम से वो कहलाएगी पी सफिक्स स्मॉल ए, जो ट्रांसमिट हो जाएगी वो क्या कहलाएगी पी। रेडियंट पावर ऑफ इंसिडेंट लाइट P0, रेडियंट पावर ऑफ एब्सॉर्ब लाइट, रेडियंट पावर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है, कुछ एब्सॉर्ब होती है और रिमेनिंग जो है वो ट्रांसमिट होती है। जो सोर्स से रेडिएशन आएगी वो रेडियंट पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कहलाएगी, जो एब्सॉर्ब होगी वो रेडियंट पावर ऑफ दी एब्सॉर्ब रेडिएशन कहलाएगी, और जो रिफ्रैक्ट होगी वो रेडियंट पावर ऑफ रिफ्रैक्टेड रेडिएशन कहलाएगी, जो रिफ्लेक्ट होगी वो रेडियंट पावर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहलाएगी, और जो ट्रांसमिट होगी वो रेडियंट पावर ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन कहलाएगी। लैम्बर्ट्स लॉ, when a beam of monochromatic light is allowed to pass through a transparent medium, the rate of decrease of radiant power with thickness of the medium is directly proportional to the radiant power of incident light. The rate of radiant power of incident light. That means यहाँ पर जो है वो क्या बोल रहा है कि when allowed a transparent medium, the radiation is allowed to pass through a transparent medium, decrease in radiant power with thickness of the medium. मतलब ये रिलेशन किस में दे रहा है, एब्सॉर्बेंस और पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम। तो इसके बेसिस पर क्या है, एब्सॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ अगर बढ़ेगा तो एब्सॉर्बेंस बढ़ेगा, पाथ लेंथ कम होगा तो एब्सॉर्बेंस कम होगा। पाथ लेंथ बढ़ना और कम होना मतलब क्या कि क्वेट का इंटरनल जो थिकनेस है वो कम है, तो एब्सॉर्बिंग स्पेसिस इन द पाथ ऑफ रेडिएशन वो कम रहेगा, इसीलिए एब्सॉर्बेंस भी एब्सॉर्ब भी रेडिएशन कम होगा, और ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होगा। लेकिन वही अगर थिकनेस बढ़ा देंगे तो इन द पाथ ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्बिंग स्पेसिस इज मोर, देयरफॉर एब्सॉर्बेंस इज मोर एंड ट्रांसमिटेंस इज लेस। तो लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ रिलेट करता है, लैम्बर्ट्स लॉ रिलेट करता है एब्सॉर्बेंस विथ थिकनेस ऑफ द मीडियम। कैपिटल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल बी। वो बोलता है कि पाथ लेंथ इंक्रीज होगा तो इंटरनल थिकनेस इंक्रीज होगा तो एब्सॉर्बेंस इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम अलाउ करेंगे एक रेडिएशन को टू पास थ्रू अ कुवेट विच होल्ड द सैंपल, तो कुवेट का इंटरनल डायमीटर इंटरनल थिकनेस अगर कम है तो रेडिएशन की पाथ में एब्सॉर्बिंग स्पेसिस कम आएगी, इसीलिए एब्सॉर्बेंस कम होगा, ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम थिकनेस ऑफ द इंटरनल कुवेट का जो थिकनेस है इंटरनल जो पाथ है वो इंक्रीज़ कर देंगे, पहले एकदम बारीक कुवेट लिए थे फिर चौड़ी कुवेट लिए तो क्या हुआ, इंटरनल थिकनेस बढ़ गया, इंटरनल थिकनेस बढ़ेगा दैट मीन्स क्या होगा कि रेडिएशन की पाथ में जो एब्सॉर्बिंग स्पेसिस ज़्यादा आएगी, एब्सॉर्बिंग स्पेसिस ज़्यादा आएगी तो एब्सॉर्बेंस ज़्यादा होगा और ट्रांसमिटेंस कम होगा। यही बात क्या बोला है, लैम्बर्ट्स ने बोला है कि एब्सॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द मीडियम। बियर्स लॉ, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडिएंट पावर विथ कॉन्सेंट्रेशन of the medium is directly proportional to the radiant power of incident light। ये रिलेट करता है एब्सॉर्बेंस को विथ कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स कैपिटल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका कम है मतलब क्या, एब्सॉर्बिंग स्पेसिस कम है, जब हम रेडिएशन को पास करेंगे तो रेडिएशन जो है कम अमाउंट में एब्सॉर्ब होगी, रिमेनिंग जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं अगर, तो क्या होगा कि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आप बोल सकते हो एब्सॉर्बिंग स्पेसिस बढ़ेगी, रेडिएशन पास करेंगे, एब्सॉर्बिंग स्पेसिस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एब्सॉर्बेंस ज़्यादा होगा, ट्रांसमिटेंस कम होगा। अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एब्सॉर्बिंग स्पेसिस बढ़ेगी, एब्सॉर्बेंस ज़्यादा होगा, ट्रांसमिटेंस कम होगा। मतलब ये बियर्स लॉ रिलेट करता है कि एब्सॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। और
combined law is called as Lambert's-Beer's law, and it is also called as Beer's law. Mathematically, it is written as capital A is equal to small a into B into C. Small a is the proportionality constant, or proportionality constant is called as absorptivity. A is directly proportional B, जैसे ही बोलेंगे Lambert's law. A is directly proportional to C, Beer's law. A is directly proportional to BC is said to be Lambert's-Beer's law. Or small a or small epsilon is called as proportionality constant. Instrumentation, there is some skeleton of instrumentation of the spectrophotometer. Source of radiation, monochromator, examined solution, detector, measuring instrument. Source of radiation are generally tungsten filament lamp is used as a source of radiation. When the radiation coming from the source, it is called as radiant power of incident light. It is passing through the monochromator. मोनोक्रोमेटर और जो भी रेडिएशन सोर्स से आती है वो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन रहती है, और मोनोक्रोमेटर में जैसे ही हो जाती है तो पॉली से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मतलब सिंगल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज ऑब्टेन आफ्टर मोनोक्रोमेटर. Then it is it is entered into the solution which is under study. Depending upon the path length, depending upon the concentration of the solution, radiations are absorbed and remaining is transmitted. It is detected with the help of detector. There are various type of the detector are used. We shall discuss it later on. And then it is it is passing through, or it is strike on the measuring device. डिटेक्टर ऑफ द रेडिएशंस, पहला डिटेक्टर जो यूज़ होता है वो जनरली फोटोवोल्टाइक सेल है. फोटोवोल्टाइक सेल इज यूज एज अ डिटेक्टर. दिस सेल इज ऑल्सो नोन एज बैरियर लेयर सेल और फोटोट्रॉनिक सेल. Radiant energy falling on it generate the current at the interface of metal and semiconductor. It is operated without the use of battery, or a typical photovoltaic cell is shown in the figure. See here, it consists of the three metal plates. See, base plate is called as the base plate, glass plate, metal ring, etc. and etc. When जैसे ही आप रेडिएशन यहाँ पर फॉल होती है ऊपर से, कहाँ से रेडिएशन आती है, पहले रेडिएशन सोर्स से आती है, मोनोक्रोमेटर में जाती है, मोनोक्रोमेटर से रेडिएशन जो मिलती है हमारी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मिलती है. ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फिर फॉल कहाँ होती है, ऑन दी सैम्पल सोल्यूशन. सैम्पल सोल्यूशन से निकलने के बाद वो डिटेक्टर पर फॉल होती है, और जैसे ही डिटेक्टर पर फॉल होती है तो यहाँ पर p-n जंक्शन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड एंड दे फ्लो in the outer circuit. Due to this flow, the current is developed and which is recorded with the help of readout device. Either you can record the absorbance or you can record the transmittance with the help of spectrophotometer or with the help of colorimeter. Phototube, it is another type of the detector which is used for the detection of how much amount of radiation is transmitted, or you can say that how much amount of radiation is emitted or absorbed. And third type of detector is photomultiplier detector. Photomultiplier detector consists of here the two type of the cathode. एक कैथोड रहता है, एक एनोड रहता है. एक एनोड है, कैथोड की जो सरफेस रहती है वो फोटोसेंसिटिव ट्यूब से वो कोट रहती है. जैसे ही रेडिएशन वहाँ पर फॉल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर evolved and small half circles are called as, this half circle which is shown in the figure is called as the dynode. There are number of dynodes are present. जैसे ही रेडिएशन कहाँ से आएगी, सैंपल से, और वो रेडिएशन फॉल होती है ऑन फोटो इमिसिव कैथोड. जैसे ही फोटो इमिसिव कैथोड पर वो फॉल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है और वो स्ट्राइक होता है फर्स्ट डायनोड पर. सपोज कर लो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ, वो 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होगा फर्स्ट डायनोड पर. ऑन द बेसिस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड.
and this 4 electron is strike on the second diode, and on the basis of the 4 electron here 8 electrons are liberated, which is now strike on the third diode. 8 इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट होंगे और वो फिर फोर्थ डायनोड पर स्ट्राइक करेंगे। 16 की बेसिस पर 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट होंगे और वो फिर फर्दर डायनोड पर स्ट्राइक करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मल्टीप्लाई होते जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, a photo multiplier detector. Thank you for watching.